पॉलीगॉन का अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं कि पॉलीगॉन के अंदर जब मैं भी काम करता था तब आसिफ आए थे एंड एट दैट टाइम हिम एंड हमजा दे वर द वंस जो डीफाई को पॉलीगॉन के ऊपर एक्चुअली लेके आना चाह रहे थे। तब तक सिर्फ एक क्विक स्वैप और इजीफाई नामक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करते थे, उसमें ही काफी अच्छा वॉल्यूम आने लग गया था बिकॉज इट वाज क्विकस्वैप वाज वाज अ फोर्क ऑफ यूनिस्वैप एंड EasyFi was a fork of Compound, if you say so. एंड उसके ऊपर ही लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लग गए थे बिकॉज जो कंपाउंड और यूनिस्वैप थे वो इथेरियम के ऊपर एग्जिस्ट करते थे और उस पर $100 फीस लगती थी कुछ भी करने के लिए। अगर आपको एक स्वैप करना है यूएसडीसी से यूएसडीटी में, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें $100 फीस लगती थी। तो तब से लोगों ने पॉलीगॉन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था और उनके फोर्क्स को यूज करना चालू किया था एंड दैट्स व्हेन आसिफ एंड हमजा दे got almost all the DeFi ecosystem that existed around the vicinity of DeFi on Polygon. तो वो कैसी जर्नी थी आसिफ, गेटिंग दीज बिग डेप्स, जैसे अभी यूनिस्वैप डिप्लॉयड है पॉलीगॉन के ऊपर, कर्व डिप्लॉयड है पॉलीगॉन के ऊपर, पीओएस चेन की बात कर रहा हूं मैं, बैलेंसर डिप्लॉयड है पॉलीगॉन के ऊपर। तो हुज एंड हुज ऑफ डीफाई हैव कम ऑन पॉलीगॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे जो डीफाई जो डैप्स एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं, डिफरेंसेस दिखते हैं और उनने क्यों पॉलीगॉन को चूज किया। बिकॉज जहां तक मैं समझ सकता हूँ इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क इफेक्ट्स कि आपने यूएसडीटी था आपके पास, वो कर्व पे डाला, उससे आपने एक एसेट निकाला, वो एसेट को निकाल के अपने आवे पे डाला, आवे से कुछ और बनाया। सो यू कीप ऑन बीइंग कैपिटल एफिशिएंट एंड ट्राई टू कीप ऑन गेटिंग योर यील्ड मोर एंड मोर। पर पॉलीगॉन के ऊपर ये सारे डीफाई एप्स को लाने की जर्नी कैसी थी और ये डीफाई डैप्स जो है उनमें कितनी सिमिलरिटीज हैं? Sure. So I think firstly I'll talk about the journey and then about the composability part as well. So I think true. I think back in 2021 when Hamza joined a bit earlier than me and then I joined, or उस वक्त I think there were only 3-4 DeFi protocols, and so why we had this motivation that we have to get almost all of the protocols is because I earlier talked about permissionless money, right? But just उस money की existence होने से उतनी value नहीं है ना. It has to be actually used as well. And DeFi is the only, let's say, application layer जहाँ पे that money can be used for different use cases, right? And DeFi is the only place where it is actually useful. So I think Ethereum very clearly showed that there is demand for these applications, but Ethereum in those times was unusable. वो usable थी ही नहीं. $100 गैस देना, $150 गैस देना. I remember मैंने खुद ही 100 $150 गैस दी है, and I would not recommend that to anyone. So there was very clear demand, and we realized कि ये सारी चीजें in low gas environment have to happen. और यही intent था all along. And then of course early on it was really tough because बहुत लोग के connects we did not have. We were not a VC backed project back then. We were not a fully Ethereum aligned project back then. So it was quite a struggle क्योंकि you're trying to reach out to people, but उनको they feel कि Ethereum is the bigger market and that they should stay with ETH because that is where जो fees they will generate would be highest. But I think it took some time, and then we realized that we have to get at least 2-3 big protocols early on, and I think if they come on, then जो बाकी है they also follow because they actually see value in the ecosystem, and this is where the whole network state network effect comes into play. So if you think about the journey, Aave सबसे पहले आया, then we got Curve. So if you bring Aave and Curve in a way, जो blue chip asset के जो pools हैं, let's say Bitcoin, ETH, stable coins, USDC, USDT, वो सब create हो सकते हैं. If you get Curve, then stable coin के pools you can get created. And then उसके बाद we got Sushi as well. So on Sushi you can create volatile pair pools as well. So let's say ETH, USDC,
BTC, USDC, or let's say also government's tokens were also attracting a lot of attention. So Sushi, USDC, Link USDC, and that is how it started. And then of course it kept on growing. And maybe I can uh, talk about how, Yeah. if you think about different verticals, right? So I think it's very easy. You just have to segregate it. Right now, if you think about it, DeFi के दो primary verticals हैं, and of course उन verticals में फिर बहुत सारे sub verticals हैं. So one would be trading vertical, and second would be lending vertical. अब trading में अगर आप बात करते हो तो you can then verticalize it even further, right? So you've got spot trading, you've got derivative trading, you've got order book based trading, and अगर आप lending की बात करो तो you've got lending markets like Aave, or you have got stable coin protocols, let's say जैसे Maker या Cheetah, और अब lot of people are collateralizing LSDs as well, which is staked versions of ETH. These would be Libra and Raft, these kind of protocols.